Okay, yes, so I can see myself live. Um, just starting in 2 minutes. Let other people join also. Just starting in 2 minutes. Okay, so let's start. As you guys know, every day at 8 p.m. we do biology PYQs for CUET exam, right? And that is what I'm here. That is what we are here for today as well. So before starting on with the session, I'll just quickly introduce myself. My name is Aarushi Anand, and I'm from Hindu College. I am currently pursuing BSc Honors Zoology, and my subjects in CUET were given on your screens. And I gave my CUET exam in 2023, and I got 100 percentile in three subjects, which is bio, psychology, and English, and 99.8 in chemistry and physics. So, a quick introduction of ExamFactor. As you can see, we do live lectures online, but also there are mock test series and crash courses available on their website, as you can see. Okay, so ExamFactor is offering you mock test, which is very very important for practice. Okay, so this is available for subjects accounts, VST, economics, maths, physics, chemistry, bio, history, geography, pol science, psychology, English, and general test. And then we have a crash course available for accounts, economics, maths, physics, chemistry, biology, history, political science, English, and general test. This both of these things are more than enough to cater to your last day preparations, as only 10 days are left. Oh, damn, आज से सिर्फ 10 days बचे हैं. We need to speed up, right? तो questions और revision भी हम speed up करेंगे, as well as you should also speed up your preparation by opting out for these courses and mock tests. Sorry. Okay, so let's start. And about this crash courses and mock test that I was telling, okay, there's a code that you can use AAEF20 to get discount. Okay, on the ExamFactors website, you can go and check out their courses and avail this code. Okay, so we'll start with today's question.
Okay, we've actually done a lot of questions, and this is today's. कल भी मैंने ट्रिक बताई थी, आज also we will do this, right? So we'll start with question number 1 that you can see on your screens. The question number 1, the question given on your screens is a match the following question. So you have to match list 1 to list 2. List 1 says A, RNA polymerase 1. B says tailing, C says RNA polymerase 3, and D says capping. List 2 says methyl guanosine triphosphate, 2 says small nuclear RNA, 3 says adenylate residues, and 4 says RNAs, rRNAs. So what would be the answer? ठीक है, तो शुरू करें इसका आंसर मैं बताऊं? तो मैंने हमेशा सबसे पहले बोला है कि जो आपको ऑप्शन सबसे इजी लगता है उससे स्टार्ट करो, लाइक बहुत बार बोला है तो चलो दोबारा नहीं बोलूँगी। ठीक है, सो इट सेज आरएनए पॉलीमरेज 1, राइट? ऐसे हमने इसको कर दिया मार्क। मेरे लिए बहुत ईजी है, तो आपको पता है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज: आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3, which is respectively responsible for the production of rRNA, mRNA and tRNA. ठीक है, so RMT is the key, RMT, ठीक है, RMT 1 से rRNA बनता है, 2 से mRNA बनता है और 3 से tRNA बनता है। RMT याद रखना, बस RMT याद रहना चाहिए। RMT आप कुछ भी बना लो अपना, रेड चलो बना लेना, या फिर नहीं आया तो बताना। ठीक है, सो आरएनए पॉलीमरेज 1 जैसे मैंने बोला आरएनएज बनाता, आरआरएनए बनाता है, तो इसका आंसर हो गया डी। फिर हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ही सिर्फ ए का 4 दिया हुआ है, बाकी किसी में ए का 4 नहीं है, तो एक मतलब क्वेश्चन नंबर ए हमारा ऑटोमेटिकली करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। लेकिन फिर भी फॉर जस्ट चेकिंग लेट्स जस्ट कंफर्म। ठीक है, बी की हम बात करते हैं जब टेलिंग, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट टेलिंग तो हमें पता है दैट टेलिंग हैपेंस, वेट सॉरी, टेलिंग हमारा कौन करता है? वी नो दैट टेलिंग एडेनाइलेट रेसिड्यूज करते हैं, क्योंकि कैपिंग जो है वो मिथाइलोसाइन गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से होती है। ठीक है, याद रखना कैपिंग जो है वो मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से होती है। मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट 3 वर्ड्स है ना, और कैप में भी 3 लेटर्स है, तो ऐसे यू कैन प्रोबेबली इफ यू वांट टू यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस।
ठीक है, फिर हम RNA पॉलीमरेज 3 की जब हम बात करते हैं, सो ऑटोमेटिकली हमारा कौन सा आंसर सही हो जाता है, मतलब सब एलिमिनेट कर दो, क्या सही बचा, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। स्मॉल न्यूक्लियर RNA से हम यहाँ पे क्या मतलब निकाल रहे हैं, tRNA का, क्योंकि RNA पॉलीमरेज tRNA बनाती है, RNA पॉलीमरेज tRNA बनाता है। ठीक है, सो दिस वाज योर आंसर। एज यू कैन सी पूरा रिवर्स है ये। चलो आंसर भी देख लेते हैं एक बार। आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है, सो नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। Where does the process of microsporogenesis takes place? Where does the process of microsporogenesis takes place? A. Ovule, B. Placenta, C. Anther, and D. Locule. बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब इससे इजी तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं देखा आज तक। आंसर आंसर आया आपका? क्या आया आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2? व्हाट इज योर आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए व्हाट इज योर आंसर? 10 सेकेंड में बता दो। चलो ओके, हम ना डिस्कस करते हैं। पहले तो ये बताओ, डू यू हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन? आई मीन डू यू नो द आंसर? लाइक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जब हम बात करते हैं ना, तो यू डोंट इवन हैव टू लुक एट अदर ऑप्शंस। लाइक मतलब करेक्ट आंसर पता होना इज वन थिंग, मेरे को भी नहीं पता कहाँ पे होता है, मतलब मेरे को कोई आइडिया नहीं है। अगर मुझसे कोई ऐसे रैंडमली पूछेगा ना, वेयर डज द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेक्स प्लेस, I'll be like, हाँ, I'll take 2 minutes to think about it. But ये क्वेश्चन आप पढ़ो, ये कह रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और ऑप्शंस दिए ओव्यूल, प्लेसेंटा, लोक्यूल, जो कि हो ही नहीं सकते। व्हाई? बिकॉज ये क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंजियोस्पर्म्स का, है ना। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज फॉर माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर इज पोलन, माइक्रोस्पोर इज मेल गैमीट, और मेल गैमीट का जो प्रोडक्शन होगा, लाइक मेल गैमीट का प्रोडक्शन इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर ये ऑप्शन होगा आपका, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ओके, सो एक कमेंट आया, they said placenta. So देखो, मैंने अभी अभी ये समझाया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जब हम बात करते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज प्रोसेस ऑफ मेल गैमीट प्रोडक्शन। ठीक है, मेल गैमीट कैसे बनेगा? मेल गैमीट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में तो बनेगा नहीं, ओव्यूल में नहीं बनेगा, प्लेसेंटा में नहीं बनेगा, लोक्यूल में नहीं बनेगा, ये सारे फीमेल पार्ट्स हैं। तो क्या बनेगा? एंथर में बनेगा। तो हमारे पास एक ही करेक्ट ऑप्शन रह जाता है, एंथर। मतलब आपका नाम ओके है यूट्यूब पे, आई होप आपको ओके हो गया होगा अब।
ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है दैट व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन द म्यूसाइड्स ऑफ मेज। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन द म्यूसाइड्स ऑफ मेज? ओके, सो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं अब। तो ये क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन द म्यूसाइड्स ऑफ मेज। चलो मैं ये मैं क्वेश्चन आपका थोड़ा चेंज कर देती हूँ, लाइक बाद में कर देती हूँ। म्यूसाइड्स ऑफ ह्यूमंस, इसका आंसर क्या होगा? सो मुझे दो अलग अलग आंसर्स दो। एक फॉर मेल्स, सॉरी मेज, एंड दूसरा फॉर ह्यूमंस। व्हाट इज द आंसर फॉर मेज एंड व्हाट्स द आंसर फॉर ह्यूमंस? मतलब देखो, मेस में तो यू शुड नो द स्पेसिफिक क्रोमोसोम कि कितने होते हैं उसमें, है ना। पर ह्यूमंस में तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आप मुझे बताओ मियोसाइट्स का क्या मतलब होता है और ह्यूमंस में कितना होगा क्रोमोसोम नंबर मियोसाइट का? जस्ट गिविंग यू 10 seconds टू आंसर। ठीक है, सो बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑल्दो वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीयूईटी एग्जाम में वही आया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो है यहाँ पे वो है कि म्यूसाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, म्यूसाइट्स क्या होते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ दैट म्यूसाइट्स आर द cells that undergo meiosis। ठीक है, और अगर कोई अंडरगो मियोसिस हो रहा है, मतलब जो इसका प्रोडक्ट है वो एन बन रहा है, सो इस सेल की प्लॉइडी कितनी होनी चाहिए? इस सेल की प्लॉइडी होगी 2n। ठीक है, सो अगर हम मेज की बात करते हैं तो मेज का मियोसाइट मतलब क्रोमोसोम नंबर ऑफ मियोसाइट्स इज 20। ठीक है, और अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एंड हमारा आंसर बनता है क्रोमोसोम 46, नंबर एज 46। ठीक है, नाउ लेट्स, इसका आंसर इज सी।
Now, question number 4. Which of the following is correct about oral pills? Question says A. They contain estrogen. B. They contain relaxin. C. They contain progestogens. And estrogen. And D. They contain testosterone. ओरल पिल्स के बारे में क्या सही है? What is the answers? Okay, so आपको I'm giving 30 seconds to answer this question. Till the time I'll just plug my laptop to the power supply. Charge नहीं है बिल्कुल भी. Okay, hi. So, did you guys solve? Did you guys have an answer? Question number 4. Which of the following is correct about oral pills? तो चलो इस question को पढ़ते हैं एक बार. So it says that they contain estrogen. ठीक है. Then they say that they contain relaxin, and then they say that they contain progestogens and estrogen, and they contain testosterone. So testosterone is not primarily a human. Sorry, not primarily wait, not primarily a female hormone, right? So testosterone cannot be the answer. Just a second. So testosterone, option number D cannot be the answer. Right. Okay, then the B says that they contain relaxin. Now we know that relaxin is a hormone that is produced during the pregnancy and that is produced by the ovary. Right. ये मैंने आपको कल भी बताया था. Relax, don't worry. Relaxin is produced by ovary, right? So they are produced by ovary. Testosterone is a male hormone. Now we are left with two options, which is A, they contain estrogen, and C, they contain progestogens and estrogen. So the correct answer for this is gonna be C, because progestogens आपको पता होंगे, they are also one of the major वैसे
प्रोजेस्टेरॉन होना चाहिए शायद. ओके, सो आई गेट बैक टू यू अबाउट दिस कि प्रोजेस्टोस्टेरॉन होना चाहिए, प्रोजेस्टोजेंस होना चाहिए. बट हाँ, प्रोजेस्टोजेंस इज लाइक, हाँ प्रोजेस्टोजेंस ही होगा, सॉरी प्रोजेस्टोजेंस ही होगा, बुक में ये लिखा है एग्जैक्टली. एंड देखो ये है आपके हॉर्मोन्स विच विल प्रिवेंट प्रेगनेंसी एंड दैट इज व्हाट ओरल पिल्स आर टेकन फॉर, राइट? So question answer number C is the correct answer. Okay, so yeah, C is the correct option. Now, question number 5. Question number 5 says, in food chain, if there is 500 joules, sorry, 5000 joules of energy available to the producers, then how much energy will be available to the secondary consumer? Your answers are 500, 50, 5 or 0.5. ये तो बहुत easy question है. आपको मैं I'm giving you some um 30 seconds to solve this. 30 seconds मतलब आंसर देने के लिए. ओके, सो लेट्स सी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. सो हमें पता है कि इस वाले क्वेश्चन में हमारा लगेगा 10% रूल. 10% परसेंट रूल. ठीक है. ठीक है, तो एक बार हम वो बनाते हैं इसकी फूड चेन बनाते हैं. तो हमारे पास ये कह रहा है कि प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स के बाद वी हैव, वेट वेट वेट, प्लांट्स के बाद हमारे पास आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर, देन उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर, राइट. सो देखो, प्लांट्स के पास अगर 5000 जूल्स है तो इसका 10% यानी कि 50 जूल्स जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर पे. देन 50 का 10% जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर पे, दैट इज 0.5 जूल्स. सही बोला ना? नहीं ना? राइट. सो अगर हम बात करें कि 5000 जूल्स है, ठीक है, तो उसका 500 जाएगा आगे प्राइमरी कंज्यूमर पे, एंड देन 50 जाएगा प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर पे. तो 50 जूल्स इज योर आंसर. आंसर बी इज करेक्ट, राइट. सो 10% लो, 10% मैथ्स लगानी है, कहीं बार गलत हो जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस. एक बार पहले भी था. Okay, so your sixth question is the process of conversion of spermatids to spermatozoa is called. चलो आपकी हेल्प करने के लिए एक ऑप्शन तो मैं एलिमिनेट कर देती हूँ, because sporogenesis is a process that happens in spore formation or like in angiosperms, है ना? And we are talking about humans right now.
human reproduction. So your options are spermiation, spermiogenesis, and spermatogenesis. Okay, so let's get to this question. अब I'll tell you, चलो ये है और स्पोरोजेनेसिस हमने पहले एलिमिनेट कर दिया था, राइट? तो अब हम एलिमिनेट करते हैं इनमें से कोई. So मैं आपको बता दूँ that spermatogenesis, since it has the prefix spermato, it has to do something with spermatogonia, ठीक है, which is not the question that is given. ठीक है, हमारे को कोई लेना देना नहीं है स्पर्मेटोगोनिया से एट द मोमेंट. So this is also not the correct answer. Now spermiation is something that happens when the sperms get released by the मतलब uh, the sperms get released मतलब scrotum से जब जाते हैं that then the process is known as spermiogenesis. So right now we have only one option left, eliminate कर दिया हमने बाकी सब, and the answer becomes spermiogenesis. So your answer is option number B, spermiogenesis. Now question number 7. Question number 7 says that the Leydig cell produce A. Seminal plasma, B. Progesterone, C. Androgens, and D. All of the above. Again, a very easy question that you can eliminate some things out. Okay, so now let's eliminate इसमें. So as I've said कि देखो जब भी ऐसे questions आए तो देख लिया करो मेल फीमेल वाला पार्ट क्या होता है ना. So we are talking about Leydig cells, and Leydig cells में Leydig cells are present in the male reproductive part. So progesterone तो primarily male hormone नहीं है, तो ये तो नहीं होगा आंसर. ठीक है. Then we have all of the above, वो भी कट जाता है because progesterone is not the answer. तो seminal plasma और androgens में से तो clearly androgens is the answer because book में लिखा है. But अगर आप seminal plasma के बारे में सोचो तो seminal plasma Leydig cells क्यों बनाएंगे? Like सेमिनल प्लाज्मा सेमिनल वेसिकल से आता है, तो वो तो नहीं हो सकता, राइट? सो दिस इज लाइक क्लियर कट आंसर विच इज एंड्रोजन्स. ठीक है. नाउ द लाइक द ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है. नाउ वी कम टू 8th क्वेश्चन. Okay, so 8th question says that
The process of aeration is done at which of the following step of sewage treatment? अगेन थोड़ा एलिमिनेट कर दो और देखो आंसर क्या होगा. ओके. ओके सो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन. अगर हम बोलते हैं मतलब एलिमिनेट कर दो, मैंने बोला था तो देखो, both B and C we are talking about secondary treatment and biological treatment. And अगर B और C करेक्ट मतलब अगर B करेक्ट है तो C भी करेक्ट है, और अगर B और C करेक्ट है तो D करेक्ट है, राइट. एंड ए इज फिजिकल ट्रीटमेंट. फिर देखो ए में होता है एरेशन की जब हम बात करते हैं वो होता है एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए. और एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो कराने की जरूरत तभी पड़ेगी जब हम बैक्टीरियाज ले रहे हैं, और बैक्टीरिया अगर ले रहे हो तो दैट्स द बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट. सो प्राइमरी ट्रीटमेंट तो इज नॉट द आंसर, बिकॉज प्राइमरी ट्रीटमेंट इज फिजिकल. प्राइमरी ट्रीटमेंट इज फिजिकल ट्रीटमेंट. ठीक है. सो फिजिकल ट्रीटमेंट तो आंसर नहीं है, तो आंसर तो बी है. और बी है तो सी है, सी है तो डी है. सो आंसर इज डी. ओके लेट्स सी. यस द आंसर इज डी. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देन क्वेश्चन नंबर 10. उसके बाद वील डू इन्वायरमेंटल इश्यूज जो रह गया था. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 says secondary succession takes place at A. Newly cooled lava, B. Burnt forests, C. Bare rock, and D. All of the above. Chalo, okay. So again, let's talk about this. Um, okay. Hello everybody जो भी अभी अभी join कर रहे हैं. So yeah, we are talking about this question.
तो इस क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो बेर सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? सेकेंडरी सक्सेशन इज सक्सेशन और पूरा सेम प्रोसेस ही होता है जैसे प्राइमरी सक्सेशन में होता है, राइट? बट सेकेंडरी सक्सेशन की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है दैट दे आर मोर क्विकर, ठीक है? They are quicker, and why they are quicker? Because some sort of life already has been there and nutrients are there. Like bare rock की जब हम बात करते हैं तो it's rock, so that's gonna be primary succession. Primary succession because lichens have to come, they'll have to break down the rock, तो उससे sand बनेगी, उससे फिर आपका like soil होगा, फिर vegetation grow करेगी और बहुत बड़ा process होगा that would take a lot of time. Secondary succession does not really take that much amount of time, है ना? Then newly cooled lava. Newly cooled lava is also something that comes under primary succession because again उसमें आपका leaching होगा, उसमें आपका um, you know नया vegetation grow होगा. So if this and this is not the answer, all of the above is automatically not the answer. Answer is so the correct answer is burnt forests. The correct answer is burnt forests. ठीक है, देख भी लेते हैं and answer B is correct. ठीक है, now we come to question number 10. External fertilization takes place in which of the following? A. Fishes, B. Amphibians, C. Majority of algae, and D. All of the above. Okay, so now we come to this question. And what is the answer? What do you guys think is the answer? Amphibians में होता है, when we say amphibians, so सारे amphibians में होता है आपका external fertilization. So yes, सारे amphibians में fertilization होता है external, and then majority of algae में भी होता है, fishes में भी होता है. So आपका answer becomes all of the above. Now इस केस में कुछ eliminate करने को है ही नहीं, ठीक है? amphibians में तो होता ही है, right? So the option D, option number D is correct. And D is your correct answer, which is all of the above. ठीक है? Now, as I said, we'll do environmental issues. ठीक है? So उससे पहले I'll remind you that ExamFactor की site पे you can go and put on this code AAEF20 to get get discount on crash courses and mock tests available, which you should uh, see, check out एक बार, right? So now, as I said that we'll do environmental issues. So just give me 2 minutes. Let's take a 2 minutes break because be I'll be needing
2 minutes to open the page. Okay, so I have opened the page. Let us start. Okay, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं. हम पढ़े डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस. तो दे आर टॉकिंग अबाउट ऐसी डिग्रेडेशन जो कि तब होती है जब हम रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते. तो जब तो हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते, हम रिसोर्सेज एक तो वेस्ट कर रहे हैं, ऊपर से अगर हम उसे सही तरीके से यूज़ ना करें तो वो अलग से पोल्यूशन क्रिएट करेगा. ठीक है. सो ये हमारे इम्पॉर्टेंट इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रैक्टिसेस. एक तो यह है सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन. तो जब हम फर्टाइल टॉप सॉइल लाइक बनाने में इट टेक्स सेंचुरीज, राइट. It says that development of fertile topsoil takes centuries, but it can be removed very easily due to human activities like important over cultivation, unrestricted grazing, deforestation, and poor irrigation practices, resulting in arid patches of land. So, when large barren patches extend and meet over time, a desert is created. So, desertification is a practice of improper resource utilization. So internationally, it has been recognized that desertification is a major problem nowadays, particularly due to increased urbanization. Now, the second thing that we have is waterlogging and soil salinity. So irrigation without proper drainage of water leads to waterlogging in the soil. Besides affecting the crops, waterlogging draws the salt to the surface of the soil. तो सॉल्ट डेपोजिशन हो जाता है सॉइल के ऊपर वाली लेयर में. बाय बिकॉज वाटर लॉगिंग की वजह से तो सॉइल सैलिनिटी बढ़ जाती है ना. सो दिस increased soil content is inimical means harmful to the growth of crops and is extremely damaging to the agriculture. समझ रहे हो. So these are two या three कह लो या four कह लो actually practices that are very improper resource utilization. Now we come to deforestation particularly. ठीक है. सो यू ऑलरेडी नो व्हाट डिफॉरेस्टेशन इज. यहाँ पे कुछ स्टैट्स हैं जो आप एक बार पढ़ लेना. देन आई सेड कि ये वाली जो टॉपिक, ये वाला जो चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिसीज दी हुई हैं या फिर एक्ट्स दिए हुए हैं. सो एक और पॉलिसी है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया which has recommended 33% forest cover for plains and 67% for the hills. So plains में आपका forest cover 33 होना चाहिए और
सॉरी हाँ, और हिली एरिया में आपका फॉरेस्ट कवर शुड बी 67%. Now, how does deforestation occur? So, a number of human activities contribute to it. One of the major reasons is the conversion of forest to agricultural land so as to feed the growing human population. Okay, so trees are axed for timber, firewood, cattle ranching, and for several other purposes. Now we have two types of agriculture. जैसे जो दिया हुआ है मतलब एक सॉरी एक जिसके दो नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एंड झूम कल्टीवेशन. ये सारे कॉमन नेम्स है ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के. ठीक है, इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, तो इसमें होता क्या है आपको तो ये पता ही होगा. हमने बहुत दिस इज समथिंग दैट वी आर स्टडिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो इसमें होता क्या है कि हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद वी बर्न द लैंड. ठीक है, देन द एश इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर एंड द लैंड इज देन यूज्ड फॉर फार्मिंग फॉर कैटल ग्रेजिंग. देखो ये जो अब मेथड है ये होता क्यों है? ये मेथड होता है बिकॉज इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल. ठीक है, बेनिफिशियल ये बहुत है मेथड. वाई? बिकॉज जो एश होता है ना दैट इज अ वेरी गुड फर्टिलाइजर. ठीक है, बट दिस in this cultivation the land is supposed to be left for a very long time so that the fertilizer like the land becomes fertilized so that the soil gets replenished. ठीक है, सो रिप्लेनिश होने के लिए हमें बहुत टाइम तक छोड़ना पड़ता है. ठीक है, लेकिन आजकल सिंस वी हैव सो मच स्कार्सिटी ऑफ लैंड एंड वी हैव अ लॉट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन, तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी उस लैंड को यूज़ कर देते हैं. तो इसीलिए आजकल द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और जूम कल्टीवेशन इज नॉट वर्किंग एंड इट इज कॉजिंग एडिशनल प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो इसमें अब क्या होता है कि after cultivation the area is left for several years so as to allow its recovery. The farmers then move on to other areas and repeat this process. In earlier days when June cultivation was in prevalence, enough time gap was given such that the land recovered from the effect of cultivation. Like I said, बहुत gap दिया जाता था. ठीक है, with increasing population and repeated cultivation, the recovery phase is done away with, resulting in deforestation. What are the consequences of deforestation? So one of the major causes enhanced carbon dioxide concentration in the atmosphere. Obviously because जितने पेड़ नहीं होंगे वो कार्बन कंटेंट होल्ड कर सकते हैं एंड अगर वो नहीं होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होल्ड नहीं कर पाएंगे और ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर पाएंगे. ठीक है, so deforestation also causes loss of biodiversity. Why? Because that's a loss of habitat to a lot of species. ठीक है, so disturbs hydrologic cycle. Hydrologic cycle is water cycle. Causes soil erosion because जब roots ही नहीं होंगे to hold on to the soil, soil erosion तो होगा ही and may lead to desertification in extreme cases. This we did we study before also. So now reforestation is the opposite of deforestation. Reforestation is the process of restoring a forest that existed but was removed at some point of time in the past. So reforestation may occur naturally in a deforested area or however we can speed it up by planting trees with due consideration to biodiversity. ठीक है, now we have case study on people's participation in conservation of forests. तो ये जो है ना people's participation, इसमें we talk about the Bishnois and the Chipko movement. अमृता देवी का अमृता देवी वॉज बिश्नोई में. सो अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड भी होता है फॉर इंडिविजुअल्स हु आर वेरी like supportive to ये आपका रूरल एरियाज. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट बिश्नोइज. एंड देन वी हैव चिपको मूवमेंट जो गढ़वाल हिमालयाज में हुआ था. और बिश्नोई वाला कहाँ पे हुआ था? जोधपुर राजस्थान. ठीक है, सो दिस वन वन ठीक है, चिपको मूवमेंट टू. यू नो अबाउट चिपको मूवमेंट जो मतलब पेड़ से चिपक जाते थे so that ट्रीज को काटा ना जाए. ठीक है, एंड 3 जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट. सो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? सो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में गवर्नमेंट क्लोजली वर्क करती है विद लोकल कम्युनिटीज फॉर प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लोकल कम्युनिटीज का कोलैब समझ लो.
ठीक है, टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, ठीक है, इन रिटर्न फॉर द सर्विसेज टू द फॉरेस्ट द कम्युनिटीज गेट बेनिफिट ऑफ वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक fruit, gum, rubber, medicine, etc. And thus the forest can be conserved in a sustainable manner. ठीक है, लोकल कम्युनिटीज के साथ टाई अप करके गवर्नमेंट कैन सेव द फॉरेस्ट. दिस इज थ्री, दिस चिपको मूवमेंट. एंड ये भी याद रखना ऑब्वियसली 1974 में हुआ था, 1974. एंड बिश्नॉइज वाला तो लाइक बहुत पहले का है, इट्स इन 1731, 1731. कुछ रह गया, कुछ तो रह गया. हाँ, ये भी नहीं किया हमने, ये भी नहीं किया. मैं वही सोच रही थी कि हमने तो बहुत कुछ नहीं किया. हाँ, एग्रोकेमिकल वेस्ट एंड देयर इफेक्ट्स तो वी डिड. नाउ रेडियो एक्टिव वेस्ट. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. वो मुझे समरी में जब मैंने देखा ना, ओजोन लेयर और CFCs, तब मुझे याद आया कि हाँ कुछ तो रह गया, कुछ तो वी डिडंट डू. ठीक है. So now let's come to radioactive waste. So initially, nuclear energy was hailed as a non-polluting way of generating electricity, which is very true. आपने ये physics में पढ़ा होगा about radioactive reaction, radioactivity, है ना? And आपका जो nuclear reactions होते हैं, addition reaction और आपका nuclear reaction में मतलब वो तो पढ़ा होगा ना, अल्फा बीटा गामा. I mean अल्फा रिलीज होती हैं, देन बीटा पार्टिकल्स होते हैं, है ना? ओके, एनीवे, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स. सो नाउ रेडियो एक्टिविटी हमें पता है. सो लाइक बट later on it was realized that use of nuclear energy has two very serious inherent problems. The first is accidental leakage, as occurred in Three Mile Island and Chernobyl incident, and the second is the safe disposal of radioactive waste. तो हमें तो पता है शर्नोबिल वाला इंसिडेंट हुआ था, इट वाज वेरी फेमस. ठीक है. एंड तो लीकेज मतलब हम रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, फटाफट फटाफट फटाफट. तो ये क्या होता है, चेन रिएक्शन होता है. मतलब 2-3 सेकेंड, मतलब अगर ये स्टार्ट अभी हुआ तो 2-3 मिनट में पूरा पूरा लाइक एनर्जी, और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है. तो अगर इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है और अगर ये लीक कर गई तो पूरा आपका बहुत बड़ा एरिया खराब हो जाएगा. सो दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम इज नाउ से डिस्पोज कैसे करें, बिकॉज चेन रिएक्शन हो रहा है. So, radiation that is given off by nuclear waste is extremely damaging to organisms. है ना, इतना damaging that जब Hiroshima Nagasaki happened, a lot of years after that भी वो consequences देखने को मिल रही थी, because it causes mutations at a very high rate. That's what I'm talking about, mutations. है ना, mutations. ये हमने DNA में भी पढ़ा है ना. So at high doses, nuclear radiation is lethal, but at lower doses, it creates various disorders, the most frequent of all being cancer. Therefore, ये भी हमने पढ़ा था, carcinogenic होती है radiation. Therefore, nuclear waste is an extremely potent pollutant and has to dealt with utmost caution. तो हम करते क्या है, हम sufficient pre-treatment करते हैं, and उसके बाद हम इसको बहुत deep down bury कर देते हैं, 500 meter deep. ठीक है, below the earth surface, है ना. So now we come to greenhouse effect and global warming. Okay, so now we come to greenhouse effect and global warming. So the term greenhouse effect has been derived from a phenomena that occurs in the greenhouse. हमें पता है greenhouse में जो radiations है वो greenhouse जब हम बनाते हैं तो उसमें जो radiations होती है वो उसके अंदर ही रहती है, हम ऐसा mechanism बनाते हैं, है ना. So in a greenhouse the glass panel lets the light in, but it does not allow heat to escape. और ये भी हमने पढ़ा कि infrared रेस काम करती है इसमें, बट चलो आगे भी बढ़ते हैं. So therefore the greenhouse warms up,
very much like inside a car that has been parked in a sun for a few hours, but the radiation does not go away. So the greenhouse gas is naturally occurring phenomena that is responsible for heating of Earth's surface and atmosphere. You would be surprised to know that without greenhouse effect, the average temperature of Earth would have been as chilly as minus 18 degrees Celsius. Important, rather than the present average of 15 degrees Celsius. In order to understand the greenhouse effects, it is necessary to know the fate of the energy of sunlight that reaches the outermost atmosphere. Clouds and gas reflect about one-fourth of the incoming solar radiation and absorb some of it, but almost half of incoming solar radiation falls on Earth's surface, heating it, while a small proportion is reflected back. तो कुछ हमारे पास आती है, कुछ हम रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं. Then Earth's Earth की surface re-emits heat in the form of infrared radiation. तो हमारे पास radiation आई, मान लो ये Earth है, ये Earth है, ठीक है, ये Earth है. हमारे पास radiation आई, एक सेकेंड, ये Earth है. वाह, बहुत अच्छी शेप बनी Earth की. तो हमारे पास radiations आई, ठीक है, हमने कुछ तो रिफ्लेक्ट बैक कर दी, ठीक है, कुछ हमने ऑब्जॉर्व कर दी. अब जो हमने ऑब्जॉर्व करी है वो री एमिट करती है एज इंफ्रारेड रेस, एज इंफ्रारेड रेस, ठीक है, ये वो कहना चाहते हैं. ठीक है, नाउ but part of this does not escape into the space as atmospheric gases. ये escape नहीं करता at atmospheric gases and absorb major fraction of it. The molecules of these gases radiate heat energy. अब ये जो बना है ये हीट करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन है ये हीट एनर्जी रेडिएट करते हैं. इसी वजह से हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं. So the molecules of these gases radiate energy, and major part of which again comes to Earth's surface, then heating it up once again. So this cycle is repeated many times. समझ रहे हो, ये जो cycle है, this gets repeated many times. So the above mentioned gases, carbon dioxide and methane, are commonly known as greenhouse gases because they are responsible for the greenhouse effect. What are the gases? Carbon dioxide and methane. ठीक है, और ये ना प्रपोज ये डिस्ट्रीब्यूशन भी दी हुई है दैट 60% ऑफ द ग्रीन हाउस गैस, लाइक 60% कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, 20% मीथेन का होता है, देन 14% सी एफ सीज का होता है. सी एफ सीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एंड आपका जो 6% है वो होता है N2O का, 6% ऑफ N2O. एंड दिस इज द साइकिल. मतलब देखो, हमारे पास रेडिएशन आई, कुछ हमने रिफ्लेक्ट बैक कर दी, कुछ हमने ऑब्जॉर्व कर दी, कुछ ऑब्जॉर्व करके कुछ हम एमिट करते हैं जो एटमॉस्फेयर तक ही जाती है बट वापस आ जाती है, और वापस आ जाती है. दिस इज द साइकिल, लाइक एटमॉस्फेयर तक जाती है फिर वापस आ जाती है. तो ये हीटिंग रीहीटिंग का प्रोसेस है जो चलता रहता है. एंड ये गैसेस किस फॉर्म में होता है, रेडिएशन किस फॉर्म में होता है, इंफ्रारेड रेस. किस फॉर्म में होता है, इंफ्रारेड रेस. ठीक है, आगे बढ़े. Okay, let's move further. So yes, very very important है कि line है इधर that increase in the level of greenhouse gases has led to considerable heating of earth, leading to global warming. So during the past century the temperature of earth has increased by 0.6 celsius, which is a lot. It does not seem a lot but it is a lot. Average temperature देखो 0.6 डिग्रीज बढ़ गया. एवरेज टेम्परेचर की हम जब बात करते हैं तो हम सबका एवरेज ले रहे हैं. मान लो जैसे इंडिया में सबसे गर्म जगह होगी साउथ में, ट्रॉपिकल एरियाज होंगे, है ना, एंड एरिड एरियाज होंगे. देन सबसे ठंडा वुड बी लेह लद्दाख वाली साइड, राइट, हिमालयन एरियाज. अब मान लो हिमालयन एरियाज का -4 है, और और
और इसका 44 है, नीचे साउथ का 44 है मान लेते हैं, तो एवरेज टेम्परेचर इंडिया का 22 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो हमारा ये सब everything we take into account when we calculate average temperature. So increase in the level of greenhouse gas has led to considerable heating of Earth, leading to global warming. During the past century, the temperature of Earth has increased by 0.6 degrees Celsius, most of it during the last 3 decades. Now we come to very important El Nino effect. So now scientists have believed that the rise in temperature is leading to deleterious changes in the environment and resulting in odd climatic changes. For example, El Nino effect. What is El Nino effect? Thus leading to increased melting of polar ice caps as well as other places like Himalayan snow caps. So over many years, this will result in rise in sea level and can submerge many coastal areas. The total spectrum of changes that global warming can bring about is a subject that is still under active research. ठीक है, so हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, सॉरी, तो हम बात कर रहे थे एल नीनो इफेक्ट की। तो एल नीनो इफेक्ट ना बेसिकली एक फिनोमेना होता है जो होता है हमारा पैसिफिक ओशन की साइड में। सो जस्ट अ सेकंड, हाँ, पैसिफिक ओशन की साइड में होता है। तो जो पैस मतलब देखो, होता ये इसीलिए है कि वार्मर कंडीशंस बन जाती है उसकी साइड पे, एंड सदर्न यूएस को फिर लाइक मरीन लाइफ इफेक्ट होती है, ड्राई कंडीशंस बन जाती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंस एनसीईआरटी में डेप्थ नहीं दी हुई तो इतना ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, समझ लो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, लाइक इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज द रेलेवेंस इसका, ठीक है। नाउ हाउ कैन वी कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग? सो द मीन्स इंक्लूड कटिंग डाउन use of fossil fuels, improving efficiency of energy usage, reducing deforestation, planting trees, and slowing down the growth of human population. Right? International initiatives are also being taken to reduce the emission of greenhouse gases into the atmosphere. Now we come to ozone depletion. Now we come to ozone depletion. ठीक है, so as you have earlier studied in chemistry that about bad ozone, तो good ozone भी होती है, ozone helps in our protection of the UV rays, ठीक है ना। पर ओजोन बैड ओजोन होती है लोअर एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, लोअर एटमॉस्फेयर which is troposphere, that harms plants and animals. There is also good ozone. This ozone is found in the upper part of the atmosphere called stratosphere, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जो होता है स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें गुड ओजोन भी होती है, एंड इट एक्ट्स एज अ शील्ड absorbing ultraviolet radiations from the sun. UV rays are highly injurious to living organisms since DNA and proteins of living organisms preferentially absorb UV rays, ठीक है। अगर UV rays ऑब्जर्व हो रही है तो हमारा क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रही है, राइट, म्यूटेशन हो रही है, एंड विच इज़ नॉट व्हाट वी वांट। तो यूवी रेज क्या करती है, एनर्जी ब्रेक डाउन भी करती है, केमिकल बॉन्ड्स भी तोड़ती है, और म्यूटेशंस भी होता है उससे, ठीक है। नाउ वी नीड ओजोन टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। सो द थिकनेस ऑफ ओजोन इन द कॉलम ऑफ एयर from the ground to the top of the atmosphere is measured in the terms of Dobson unit, which is DU, ठीक है। So डॉप्सन यूनिट के बारे में तो हमको ऑलरेडी पता है, राइट, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया, सीयूटी में भी आया है। सो ओजोन गैस इज कंटिन्यूसली फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। इसका फॉर्मूला भी पढ़ा, मतलब पढ़ा है कि O2 टूटता है, देन O से जुड़ता है तो ओजोन बनती है, O3 बनता है, ठीक है, and also degraded into molecular oxygen in the stratosphere. So there should be a balance between production and degradation of ozone in the stratosphere. Of late, the balance have been distributed due to the enhancement of ozone degradation by chlorofluorocarbons. तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारे होते हैं रेफ्रिजरेंट्स में, ठीक है, एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बेसिकली करता क्या है कि
वो एटमॉस्फेयर में ओजोन को डिग्रेड करता है एंड इट स्टेज इन द एटमॉस्फेयर। लाइक ऐसा नहीं है कि एक ओजोन मॉलिक्यूल ब्रेक किया तो वो हट जाएगा, सो इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, इज इट ऑलवेज स्टेज देयर। सो जितना हम CFCs यूज करेंगे उतना इट विल स्टे इन द एनवायरनमेंट एंड उतना इट विल डिग्रेड ऑक्सीजन एट एन एक्सपोनेंशियल लेवल। ठीक है, so CFCs discharge in the lower part of the atmosphere move upwards and reach stratosphere. In stratosphere, UV rays acts on them, releasing Cl atoms. Cl degrades ozone, releasing molecular oxygen. And with these atoms acting merely as catalyst, like I said, it acts as a catalyst. Cl atoms are not consumed in the reaction, and when they're not consumed, they are present forever, like they are permanent. So hence, whatever CFCs are added to the stratosphere, they have permanent and continuing effects on ozone. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारी ओजोन होल बन जाता है. So although ozone depletion is occurring widely in stratosphere, the depletion is particularly marked over the Antarctic region. This has resulted in formation of a large area of thin ozone layer which is known as ozone hole, right? So UV radiations of wavelength shorter than UVB. Now radiations की wavelength होती है, आपको पता है ना? That radiation, like that wavelength shorter than UVB, are almost completely absorbed by Earth's atmosphere, given that the ozone layer is intact, right? So, but UVB जो होती है, that damages DNA and mutations occur, as I said, like हमने पहले भी discuss किया. It also causes aging of skin, damage to skin cells, and various types of skin cancer, right? So, and in human eyes, if we observe UVB, like this is all very important. ये पार्ट में से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? So if we observe, if human cornea observes UVB radiation, uh, like if high dose of UVB goes inside your eyes, so inflammation of cornea occurs, and that is called snow blindness, or cataract may also happen, etc. Such exposure may permanently damage the cornea. Now, recognizing the deleterious effects of ozone depletion, an international treaty known as Montreal Protocol was signed at Montreal, Canada in 1987, effective in 1989, to control the emission of ozone depleting substances. This is also very important. Montreal Protocol is very important. Subsequently, many more efforts have been made and protocols have laid down definite roadmaps separately for developed and developing countries. Okay, now like there would be some other protocol for the developed countries and some other for developing countries. Okay, uh, for reducing the emission of CFCs and other ozone depleting chemicals. Right, CFCs ko rokna is the main thing. Why? Because CFCs cause an ozone degradation and they merely act a catalyst, not as something that gets consumed up. So it's not like कि वो बाद में कुछ cause नहीं करेगा, है ना? Okay, so with this we come to an end of this session at least. अब कल से genetics वगैरह start करेंगे, but आज तो we'll take a break only. I mean, sorry, we'll call it off only. Okay, so yeah, let's call it off for today. आज हमने PYQs करे और environmental issues discuss किया, and I hope आपको help किया होगा, right? But with that, we will end this stream. ठीक है? Okay, so thank you very much for joining, and I hope that you must have gotten something, like, must have learned something, right? Thank you for joining, and all the best for your exam. And yes, that was it for today. I'll be ending the stream, and I'll just wait 1 minute. If you guys have any doubts, you can comment. Okay? So I'll just wait 1 minute, and if no doubts are there, I'll just end the stream. Thank you very much.
अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच इफ यू हैव सब्सक्राइब द चैनल, दैट्स वेरी नाइस। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। And all the best for your exam. And okay, seeing no doubts, I'll just end the stream. Thank you so much. Okay, seeing no